Hello everyone, welcome to Take Off once again. In the last video, I already had discussed what is dividend, what is corporate dividend tax or dividend distribution tax, who need to pay and at what rate. Today's my topic of discussion is section 115 BBDA and section 115 BBD. We will discuss it in detail. So I will start with section 115 BBDA. ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है जब असेसी डिविडेंड रिसीव करता है फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी. एज वी ऑल नो, अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34 डिविडेंड इज एग्जेम्प्ट. कौन से डिविडेंड एग्जेम्प्ट होते हैं? जो असेसी रिसीव करता है फ्रॉम इंडियन कंपनी, प्रोवाइडेड द कंपनी हैव पेड द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स. तो जो भी अमाउंट असेसी रिसीव करेगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा. बट देर इज़ अ कंडीशन, दैट इज़ अप टू 10 लाख रुपीज़ इज़ ओनली एग्जेम्प्ट. वी विल सी द प्रोविजन अहेड. फर्स्ट ऑफ ऑल, I will discuss section 115 BBDA. So, section 115 BBDA shall apply to a dividend received from domestic company by all SSC except, means it is applicable on all SSC except these four. What are these four? First is domestic company. Means whenever a domestic company received any dividend from domestic company, then that will not be covered under this section. Next is institution referred to in section 10 subsection 23. ये सेक्शन होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए जिस पे हम एग्जेम्पशन क्लेम करते हैं अंडर सेक्शन 11 और 12, एंड दीज इंस्टीट्यूशन आर फॉर नॉन प्रॉफिट बिजनेस पर्पस. नेक्स्ट इज रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA. ये भी जब डिविडेंड रिसीव करेगी तो सेक्शन 115 BBDA एप्लीकेबल नहीं होगा. एंड फोर्थ वन इज़ नॉन रेसिडेंट एंड फॉरेन कंपनीज. इस पर भी सेक्शन 115 BBDA एप्लीकेबल नहीं होगा. अदर देन दीज फोर, कोई भी एसएससी अगर डिविडेंड रिसीव करता है फ्रॉम द डोमेस्टिक कंपनी, देन सेक्शन 115 BBDA इज़ एप्लीकेबल. BBDA सेक्शन होता क्या है? When the total dividend received from all the company exceeds rupees 10 lakh. जैसा कि हमने देखा कि अप टू 10 लाख एग्जेम्प्ट होता है डिविडेंड, एंड मोर देन 10 लाख इट इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 115 BBDA. At what rate it is taxable? At the rate of 10% in excess of 10 lakh. It means जब भी कोई एसएससी डिविडेंड रिसीव करता है इन एग्रीगेट, अगर 10 लाख रुपीज़ एक्सीड करता है, देन द अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 10 lakh will be taxable at the rate of 10% plus surcharge if applicable and cess. This is what section 115 BBDA implies. इस पे हमें कोई डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा. मीन्स जो भी टैक्स हम पे करे हैं उसका हम डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते. नीदर इट कैन बी सेट ऑफ और द expenditure shall be allowed as deduction in computing the income by way of dividend. हमें कोई एक्सपेंस का डिडक्शन हम क्लेम नहीं कर सकते हैं. What next point says? Dividend shall include deemed dividend. डिविडेंड हमने देखा था एक्चुअल होता है एंड डीम्ड होता है. सो while calculating the dividend we need to include both the dividend, that is actual and deemed dividend, except dividend under section 2 subsection 22E. This section I will be discussing it later.
Now the example, how to calculate tax under section 115 BBDA. For example, a assessee receive a dividend income from two domestic companies, which is rupees 3 lakh and 5 lakh. So rupees 3 lakh and 5 lakh from the two companies assessee received, which will be exempt under section 10 subsection 34. So assessee need not pay any tax. Now if assessee receive a dividend from another domestic company which amounts to rupees 4 lakh, means total he received 3 plus 5 plus 4, which is equals to 12 lakh. तो 12 लाख इज इन एक्सेस ऑफ रुपीज़ 10 लाख, तो 10 लाख हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 24 एंड रुपीज़ 2 लाख will be taxable under section 115 BBDA at the rate of 10%, which comes 10% of 2,20,000 will be taxable as income under the head income from other sources. Next section is section 115 BBD. ये applicable होता है जब डिविडेंड रिसीव होता है फ्रॉम फॉरेन कंपनी. BBDA वॉज एप्लीकेबल जब डिविडेंड रिसीव होता है फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी. बेनिफिट ऑफ दिस सेक्शन इज़ अवेलेबल ओनली टू इंडियन कंपनी. मतलब जब भी कोई इंडियन कंपनी डिविडेंड रिसीव करती है फ्रॉम फॉरेन कंपनी एंड इंडियन कंपनी का शेयर होल्डिंग मिनिमम 26% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल होना चाहिए इन द फॉरेन कंपनी. तो जब भी वो फॉरेन कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, देन ऑन दैट डिविडेंड इंडियन कंपनी हैव टू पे द टैक्स. एट व्हाट रेट? इट इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 15% plus surcharge 12% if applicable and cess at the rate of 4%. कौन टैक्स पे करेगा? The Indian company who have received the dividend from foreign company. No expenditure in the respect of such dividend shall be allowed. Means it will be grossly taxable. Expenditure का कोई deduction हमें नहीं मिलेगा on that dividend income. And also section 2 subsection 22E shall not be covered. ये सेक्शन जो डीम्ड डिविडेंड का सेक्शन है ये कवर नहीं होगा. सो दैट्स ऑल फॉर दीज टू सेक्शन. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई विल बी डिस्कसिंग मोर सेक्शन in detail in my next video. Thank you all.